Now, hours after Sri Lankan Prime Minister Mahinda Rajapaksa's office denied reports of his resignation, the entire cabinet of 26 ministers has resigned. This includes Namal Rajapaksa, who is the eldest son of the Prime Minister. In fact, a 36-hour curfew, which started on Saturday evening, will be continuing till this evening. Despite the curfew, there was sporadic protests in different parts of the country as citizens demanded the ousting of President Gotabaya Rajapaksa, blaming him, in fact, for steering the country into its worst economic crisis in decades. In fact, a ban on social media apps that was put in place was lifted on Sunday. Emergency has been lifted by the government of Sri Lanka. For 2 days after the massive protest which happened here on Thursday, there was total, blockage of the road and no further vehicle movement was also allowed. We are standing right next to the central bank of Sri Lanka, which was the center of the protest, and at this particular gate only, the people around in large number, in thousands of number, started to barging in, and they literally moved towards the residence of the president, which is barely 100 meters away from this location. But following to the protests and following to the public outrage, the government finally decided that they need to show some message to the people that actually they are listening to the voices. Initially, the Prime Minister and the President himself came out and they gave statement which was pertaining to some kind of political affiliation to all these protesters. But gradually, since it did not work out, and the situation on the ground is quite visibly seen, which is of a financial mess. The ministers in the present dispensation have started putting their resignation. The first one, as I've told you, was the son of the Prime Minister, Mahinda Rajapaksa. Namal Rajapaksa was the one who had put in his resignation. Lankans are right now reeling under extremely distressing times. Homes have no electricity, there is barely any food at stores, and for those who have supplies at home can barely cook or heat food because of power cuts. Sweltering weather and stinging insects are adding to citizens' misery. Here is a report from one such house that is facing dire times. श्रीलंका की सरकार के खिलाफ जो जंग है वो सड़कों पे नहीं, यहाँ की महिलाएं जो भारतीय मूल की हैं वो अपने घरों में भी जूझ रही हैं। गैस के सिलेंडर खत्म हो चुके हैं। जैसे तैसे देश से आए हमारे जैसे मेहमानों के लिए यहाँ पे चाय बनाई जा रही है। मैम, गैस का क्या पोजीशन है? घर में पाउडर मिल्क से काम चलाना पड़ा है, दूध भी नहीं आ रहा है। पाउडर मिल्क नहीं है, दूध भी नहीं है। जितना हमको मिला है हमने सुपरमार्केट से लिया है। एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसको है वो एक दूसरे को बांटते हैं। बिल्कुल, अगर आज आप सुपरमार्केट में जाओ तो शेल्फ बिल्कुल खाली है। जितना हमारे पास है हम सबको देते हैं, जितना हमारे पास है हम यूज करते हैं। देख रहा हूँ कि पसीने से लथपथ हो चुके हैं, सबको ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है यहाँ पे। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? लाइट भी नहीं है, एसी यूएसी कुछ नहीं। यही है कि बस एक होप है, एक हर इंसान के मन में एक होप होता है कि कल कुछ होएगा अच्छा, कल कुछ होएगा अच्छा, लेकिन हमारे लिए लगता है कल अभी आया नहीं है। ये माइक्रोवेव वगैरह कुछ काम कर पा रहे हैं? कुछ बच्चों के लिए करंट नहीं है तो कुछ नहीं काम करेगा। लास्ट वीक से हमको 13 घंटा पावर कट रहा है। आज प्रोटेस्ट के कारण गवर्नमेंट ने पावर कट हटाया, अदरवाइज रोज 2 हफ्ते के से पहले हमको रोज पावर कट है 13 घंटा। मेरे घर में एक मम्मी है, एक सास है, 90 इयर्स की है, एक 85 इयर्स की है। उन लोगों का तो बहुत बुरा हाल। हम तो बाहर भी जा सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं, उन लोगों ने उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। मच्छर होते हैं, ये बहुत गर्मी का मौसम होता है, तो बहुत मुश्किल टाइम है। तो हम लोग तो बेसिक चीजें मांग रहे हैं कि पावर दो हमको, गैस दो, इलेक्ट्रिसिटी, और तो कुछ चाहिए नहीं हमको। यही पशुपेश यहाँ पे हर किसी के दिमाग में बना हुआ है। चीजें महंगी हैं, लाइट नहीं है। कई दशकों से, कई पीढ़ियों से ये परिवार इसी तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अब जो हालात हो चुके हैं उसके बाद इनके पास सड़कों पे उतरने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा है।